Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. In this video, we are going to discuss some important legal current affairs for the month of May that have come up. This video is important for all the law aspirants, law students, advocates, basically anyone who wants to stay updated with the legal happenings that are going on in the country. Speaking of which, you can also follow us on Instagram where we keep posting such important legal content, such interesting legal content that keeps providing you with some knowledge or the other in tidbits. The first case that we are looking at is Dr. Jayashree Lakshman Rao Patil versus Chief Minister. Now this case pertains to the Maratha Quota. I have already made a video on Maratha Quota, वो मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या होल्डिंग्स थी कोर्ट की. कोर्ट ने फाइनली इस केस में ये बोला है कि ये जो 50% लिमिट आप दे रहे हो टू द मराठाज, जो कोटा प्रोवाइड कर रहे हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. बिकॉज इंदिरा साहनी की जजमेंट ने ऑलरेडी 50% की लिमिट सेट करी हुई है, एंड इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट एनी percentage that is exceeding 50% is unconstitutional, and there were no exceptional circumstance to show that why the Marathas should be granted reservation to the excess of 50%. The court also said कि जो power है states की to classify any caste as socially and economically backward class, ये power states के पास नहीं है, ये president के पास है as per 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो मेजॉरिटी जजमेंट ने ये बोला कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दीज आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट बेसिकली स्पेसिफाई दैट देयर विल बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेपरेटली. तो ये बोला गया है कि इन लिस्ट में जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है उसमें प्रेसिडेंट का फाइनल से होगा. प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि कौन से लोग इस लिस्ट में आ सकते हैं, एंड अगर फर्दर इस लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन या एक्सक्लूजन होता है तो वो अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास है. सो बेसिकली इट एब्रोगेटेड द पावर ऑफ स्टेट्स. जिसको चैलेंज किया है स्टेट्स ने, दे हैव फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट दैट स्टेट्स विल नॉट हैव द पावर टू डिसाइड. देन नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन वर्सेस एमआर विजय भास्कर. अब इस केस में कोर्ट ने ये बोला है कि मीडिया की जो पावर है, जो डिस्कशंस कोर्ट में हो रहे हैं, जो जजेस और लॉयर्स, द things they are discussing, the observations that are making during a court proceeding, these observations can be made public. It is the freedom of media to report these proceedings in the public, and it was held that जो fundamental right है under article 19(1)(a), that is freedom of speech and expression, that extends to reporting judicial proceedings as well. So basically जो भी portals हैं जो judicial proceedings report करते हैं, they have this right under this particular article and they cannot be stopped from doing so. Then the next case is Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited versus CG Power and Industrial Solutions. यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई अग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में जहां पर ऑलरेडी एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, so there is already an arbitration clause in the agreement between the parties. What is arbitration clause? It basically means that in case any dispute arises between the party, the same will be settled outside the court. So ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है आर्बिट्रेशन. एंड इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि दे कैन इवन अप्रोच द हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटिशन. अगर कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है किसी सिटीजन का, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द सेम, एंड जस्ट फॉर द फैक्ट कि आर्बिट्रेशन क्लॉज था ऑलरेडी अग्रीमेंट में, दैट विल नॉट बार सच अ पर्सन फ्रॉम ब्रिंगिंग अप एनी रिट पिटिशन. सो रिट पिटिशन बेसिकली वो होती है पिटिशन जो आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में फाइल होती है बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. आई हैव सेपरेट वीडियोज ऑन रिट पिटिशंस. 5 रिट पिटिशंस आर देयर. I have posted details about these writs on my Instagram channel as well as on my YouTube channel. You can watch those videos as well. Then next is सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. अब इस केस में कोर्ट ने क्या बोला कि जो सेक्शन है 304B, 304B डील्स विद डाउरी डेथ. डाउरी डेथ में 304B आईपीसी ये कहता है कि अगर देयर इज अ वुमन हु हैज सफर्ड एनी इंजरी और hurt or has been dead, why, how, due to the fact that she was subjected to cruelty or harassment by the husband or his relatives, and such a thing happens within 7 years of marriage,
then it amounts to dowry death. And there in this particular section, the words used are soon before, which says that soon before her death she was subjected to cruelty. So the court here has observed that it does not mean कि soon before death बोला है तो during that time only, immediately before that time only she should have been subjected to cruelty or anything. The court says that prosecution must establish कि कोई proximate link है as to cruelty or harassment for dowry demand by the husband or relatives. तो आपको ये दिखाना है कि एक प्रॉक्सिमेट लिंक है कि डाउरी की डिमांड हो रही है, क्रुएल्टी हो रही है एंड उसी के रिलेशन में डेथ हो रही है. सो दैट लिंक यू हैव टू एस्टैब्लिश. सो हियर द कोर्ट सेज जस्ट बिकॉज सून बिफोर टर्म इज यूज्ड इन द सेक्शन दैट डज नॉट मीन आपको ये बताना है कि इमीडिएटली बिफोर द डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू सच क्रुएल्टी. द कोर्ट सेड कि ये जो section A, it does not take into account the pigeonhole approach for causing death. So pigeonhole approach is basically what ये torts में भी है. In fact, there was a discussion that was happening on a group with relation to this. Pigeonhole is basically when you are confining the offenses or torts into pigeonholes. Pigeonholes are limited. So if you are confining offenses to these, that means कि इसके अलावा growth नहीं हो सकती है, इसके अलावा और offenses या torts include नहीं किए जा सकते हैं. However, in practice जो आप देखेंगे क्योंकि society evolve होती रहती है तो offenses और torts आते ही रहते हैं, new emerging offenses और torts develop होते रहते हैं. तो it here the court said कि आप pigeonhole theory यहाँ पर apply नहीं कर सकते. आप specifically ये categorize नहीं कर सकते कि death जो है वो homicidal है, suicidal है या accidental है. It can be due to dowry as well. तो ये पिजन होल अप्रोच यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है कि सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी. इट टेक्स इन टू अकाउंट other things as well. Establishment of approximate link is also sufficient to prove a case to put it under the case of dowry death. With this we come to the end of this video. I hope आपको समझ में आए होंगे ये cases जो मैंने discuss करे. Just in case you have any doubts or queries, mention the same in the comment box below. Don't forget to subscribe to this channel if you are new here, and also follow us on Instagram for good amount of legal updates.